All right, assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. And we all are set to have productive session, inshallah. As far as organic is concerned, electrochemistry, I know most of you struggle with anode, cathode. You're still struggling to build, the ionic half equations, or some of you struggle with polymers, esters, naming of esters, and when you're given with esters, you're still struggling to, draw the structure of the ester. So, आज हम सब कुछ करेंगे, including organic uses of, those fractions, ionic half equations of at anode, cathode, electroplating, purification of metals. And I also know that some of you struggle with reversible reactions where we have no idea where to shift the equilibrium when you increase the temperature or when you, change the pressure or you impose a change in terms of the concentration. So I hope I am perfectly audible and screen is visible. Let me join with this device and let's get started. My screen is visible now? Yes. All right. Okay. All right. So we will start with organic. The plan is we will start with organic, inshallah, and we will discuss the entire organic, followed by electrochemistry, and then, of course, followed by rate redox, and then, of course, the electrochemistry. Correct? So let me start. Let me check if I'm visible. Yes. All set. All right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just give me a minute. Have something. All right. So this is for organic chemistry. We are starting with organic. The first thing you should know, the few important definitions in organic. For example, you should know what are hydrocarbons. The hydrocarbons. Compounds that contain carbon and hydrogen atoms only. So hydrocarbons are those compounds that entirely based of carbon and hydrogen atoms. We know there is a variety in hydrocarbon that we have saturated and we have unsaturated. Saturated hydrocarbons are basically alkanes, and unsaturated hydrocarbons are nothing but alkenes. Alkenes are those hydrocarbons that contains a double bond between the carbon atoms. And saturated hydrocarbons contain all carbon-carbon bonds as single covalent. For saturated hydrocarbon, their general formula is CnH2n plus 2. And for unsaturated hydrocarbon, which is part of our syllabus, the general formula is CnH2n. What does it mean, the general formula? देखो, N represents the carbon atom. जितने कार्बन्स होंगे हाइड्रोजन उसका डबल से दो ज्यादा होंगे. For example, in alkanes, we know, imagine you have two carbons. How many hydrogen would you have? Double and then two more than double. So it would be 6. For alkenes, whatever the carbons, hydrogens are exactly double. Right? So organic, we have hydrocarbons. Hydrocarbons are of variety of type. We have two of them, carbon and hydrogen atoms only. Saturated, unsaturated. Saturated are those which have all carbon-carbon as single bond. I mean, we have just introduction. Abhi hum detail mein aayenge. The main source of hydrocarbon, I hope you all are familiar with the main source of hydrocarbon, and that is nothing but, what is the main source of hydrocarbon, guys? It is nothing but crude oil. What is crude oil? Crude oil is the mixture of different hydrocarbons. Crude oil is mixture of different hydrocarbons. How do we separate these mixture of different hydrocarbons? We use a technique called fractional distillation. I hope you all know that how does this important technique works. Fractional distillation separate the components based on their boiling point, right? So it separates
on the basis of their boiling point. The fraction with the lowest boiling point will distill off first and collected at the top of the column. So hydrocarbons, the main source of hydrocarbon is crude oil. Crude oil is mixture of different hydrocarbons. Hydrocarbons, that mixture of hydrocarbon is basically separated by a very important technique called fractional distillation. Now, how does this technique works? It separates all the components based on their boiling point. We must know the exact order of what do we call the fractionating column. So let me show you the exact order. What was that? We did this exactly, few days back. So आप उसको heat करते हो बेटा fractionating column को, and we get different fractions. What are those fractions? The fractions आपको order में याद करनी है, और मैंने ये आपके लिए हमने मिलके बनाया था. So great, rich, great, neighbor. आपको पता ही आपको आने वाला है. You must learn this in order along with the uses. Order में याद करना है, uses याद होनी चाहिए, and then of course their trends, viscosity, the density, flammability, melting and boiling point. So we have a mnemonic which will help you to learn this in order. So rich, great, neighbor, kindly donate 4 large books. What is this rich great neighbor? Rich is refinery gas. Gasoline, naphtha. So the fraction at the top, it should have the lowest boiling point. As you go down, the boiling point increases, which means the carbon atom increases, the MR increases, the intermolecular forces increases. This is kerosene. I hope aap log soch rahe hain the exact uses of each fraction. This donate is diesel oil, and 4 is fuel oil, and large is lubricating oil, and books is bitumen, right? So rich, great, neighbor, kindly donate us 4 large books because we have a chemistry exam in few days. अब तो वैसे book का फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि अब तो exam है ना. चलें फिर भी rich great neighbor से neighbor को मेरे जैसा होगा ना, बहुत अच्छा. Okay, so what is the use of refinery gas? Refinery gas is domestic fuel. See, I'm very bad at spelling, but don't trust. Just जो समझ आ रही है उसको लिख लो. It is domestic fuel. Gasoline is fuel in cars. Naphtha is chemical feedstock. Kerosene is jet oil, jet fuel. Diesel oil is oil for heavy engines. Like fuel oil is like fuel oil होता है जहाँ पे बड़े बड़े systems होते हैं, जिस तरह सेंट्रल को हॉस्पिटल है, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो you want a central heating system or central cooling system, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं. As I mentioned, I was in China in the summer, तो वहां पे जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके उस सिटी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विंटर का सीजन चलता है, तो बड़ी बिल्डिंग में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होते हैं. तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को ये सेंट्रल जिस तरह बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको ओवरऑल मैनेज करने के लिए दिस ऑयल इज सो यूज फॉर सेंट्रल heating. Lubricating oil is as a lubricant, wax or polish, and this one is my favorite, which is used in road making. अच्छा, these fractions ये आपको बिल्कुल ऐसे याद नहीं होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, and we must understand their the trends as you go top to bottom. The fraction at the top has the lowest boiling point. This one, it has the lowest boiling point. So what are the trends? The very important trends. So top to bottom, number 1, the flammability decreases. Flammability decreases. Number 2, दो चीजें decrease होती हैं ना, the what is it, flammability and volatility. Volatility decreases. ये दो चीजें ऊपर से नीचे क्या हो रही हैं, decrease हो रही हैं. The one at the top, which is this one, is the most flammable. As you go down, the flammability
decreases. The one at the top has the highest volatility. What is highest volatility? Ability to turn into vapors. So something at the top easily turn into vapors. वो vapors में बहुत जल्दी से जाएगा. The one at the top. Volatility होती है ability to turn into vapor, और highly volatile liquid वो होते हैं जिनके boiling point low होते हैं. So इसका boiling point सबसे low है. So that is why it is highly volatile. अच्छा, there are few more trends which you need to know, and those are the carbon chain, the MR, I mean the boiling point, the viscosity, they increases top to bottom. ये चीजें increase कर रही हैं. Increases, trends किसकी बात हो रही है? Top to bottom. So this is the entire thing. What you need to know about crude oil, how the fractions of the crude oil get separated, and what are their trends. It's not a guess. You will see a confirmed question both in IGCSE and in O levels, right? So hydrocarbons, what are hydrocarbons? Their variety. I mean, a few of the important things about hydrocarbon. Now let's focus on alkanes and alkenes, which we have in terms of saturated and unsaturated hydrocarbons. तो इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूं यहाँ पे alkane को, और इसको हम इसके ऊपर लिख लेते हैं. All right. So we know that there is an important test which helps us to get distinguished between alkane and alkene, and that is called bromine water test. इसको क्या कहते हैं? Bromine. How do we distinguish between alkane and alkene? You add bromine water, they give no change, and this, the orange, क्या हो जाएगा? Whenever there is a double bond between bonded atoms, between two carbon atoms, the orange color goes colorless, right? This is the main difference. Like, that is how we distinguish between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. And then we have chemical reactions. You know, we can convert alkanes के हम different reactions कर लेते हैं. I hope सबको visible है. Alkane की सबसे important और easy reaction उसका नाम है जब इसको air से react करते हैं. That is called combustion. तो alkane का combustion से reaction करेंगे, what do you get? You get carbon dioxide upon complete combustion. You may get carbon monoxide, and water is the essential product. So whenever there is a complete combustion, you'll get carbon die, a greenhouse gas, or when you have limited oxygen, you will get a toxic gas that is called carbon monoxide. And then there is one and only reaction of alkane, and that is reaction of alkane into haloalkanes, into halogenoalkanes. This is when you react your alkane. किसके साथ reaction करते थे alkane का? You react it with chlorine, right? Chlorine या bromine के साथ reaction करते थे. In the presence of UV light, the reaction is known as, what do we call this reaction? This is known as substitution reaction. This requires UV light. In the absence of UV light, yes, you will get the PDF. Don't read, no need to write. Don't write anything. You will get the PDF in the group. So just look, listen with focus. Yes, if you get something important, then you can write, but you will get this PDF. All right. So alkanes to halogenoalkanes, this is called substitution reaction. The condition of the reaction is UV light. We have chlorine or bromine or any halogen may react with alkanes to give you this product. Okay. Now we know that there is only one way of producing alkane, and that is from large alkane. Large alkanes. We break the large alkanes into smaller, more useful alkanes. The process is called, this process ko kya kehte hain? This is known as, this is called cracking. And cracking require heat and catalyst called aluminum oxide or silicon oxide. एक भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा. So we break the large alkanes into smaller, more useful alkanes and alkenes, and sometimes hydrogen gas as well. This is called cracking. So it produces more useful smaller alkanes. So that is what you need to know about alkanes. Abhi hum chapter revise karenge, and you've noticed that we have lot of past papers to solve, inshallah. So we will do past paper questions. We have polymers and we have everything. All right. So let's now talk about alkenes. अच्छा, alkane में आप सबको पता है कि the series starts with meth. We have methane,
ethane, propane, and bute. In our syllabus, we have only the hydrocarbons up till 4 carbon atom: meth, eth, prop, bute, right? Okay, so now we have alkenes, and we have lot of reactions of alkenes. Alkenes also, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी गेस है आने वाला है उसका नाम है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम इसका, स्टीम से. First of all, alkenes give addition reaction. What is an addition reaction? A reaction in which reactants react to form one product only. Whenever you get one product only, that reaction is called addition. वो आपसे पूछ सकता है कि why this reaction is addition. The reaction is addition because you have only one product. So whenever you put steam into alkene, you always going to get, what do you get? Alcohol, right? Alcohols के लिए steam चाहिए, but what are the conditions? This is called addition reaction. इसको हम क्या कहेंगे? This is known as addition reaction. इसके लिए guys we need 200 degree, we need 60 atm, and what else? We need phosphoric acid as catalyst. So this is addition reaction. This much temperature, pressure, and acid catalyst required to add steam into alkene. So अगर आपसे पूछे describe the process, you will say that the gases, ये भी gas होती है alkene जो करते हैं ethanol. Basically in our syllabus we have ethanol. So if you want to make ethanol, which alkene you will start with? You will start with ethene. Ethene is added into steam to give you ethanol. And this is an addition reaction. And this is the best way to produce alcohol, ethanol, because this is fast. Yeah, it is 200 to 300, but normally it is, mentioned, syllabus में 200 लिखा हुआ है. So वो आपसे पूछ सकता है, what are the advantages of this reaction? It is fast. The alcohol made is pure alcohol, but at the same time at the cost of, high temperature and pressure. So it is bit an expensive method at the same time. So alkenes can also be converted into dihalides. Dihalides, and what are dihalides? You see, हमने अभी start में आपको बताया कि whenever you add orange bromine, no condition is required, just at room temperature and pressure, double bond of alkene will break, double bond गया, and both carbon will get halogen. अगर bromine है तो Br लग जाएगा, chlorine है तो Cl लग जाएगा. And then alkene can be converted into, alkene को किस में convert कर सकते हैं भाई? Alkene को इसके neighbor में convert कर सकते हैं, that is known as alkane. So how you convert alkene into alkane? Very simple. You just add hydrogen. Hydrogen, this is also known as addition reaction. Hydrogen के लिए condition क्या है? You need to take nickel or platinum as catalyst, about 200 degree temperature, and a very normal pressure like 2 to 3 atm. So alkene, unsaturated, this is literally unsaturated. It can be converted into saturated hydrocarbons, which is known as alkanes. So alkene to alkane, nickel, platinum, 200 degree, and 2 to 3 atm. And we know that we can convert alkane, we can burn alkane to produce carbon di, carbon mono, and steam. So this reaction takes place in the presence of oxygen. If there is a complete combustion, you will get CO2. Incomplete combustion, you will get CO and, water. This is the entire thing what you need to know about the introduction of organic chemistry, the definition of cracking, the hydrocarbon, the sources of hydrocarbon, and the fractions that we have. We have variety of fractions. Cracking की अभी मैंने आपको definition बताई है. What is cracking? Cracking is the breakdown of large hydrocarbon into smaller but more useful. One thing which we were about to miss, and there will be definitely part of your exam, that is called isomerism or isomers. Compounds that have the same molecular formula. For example, this one. What is the name of this beautiful molecule? क्या नाम है भाई इसका? Each carbon make 4 bonds. So the carbon that is bonded to single bond, but आपने हर कार्बन से 4 लाइनें निकलनी चाहिए. 1, 2, 3, 4. Similarly, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Every carbon is bonded to 4 lines. वो लाइन सिंगल सिंगल हो सकती हैं, डबल डबल हो सकती हैं, एक सिंगल और
ट्रिपल वाली हो सकती है, but in our syllabus we have only single and double. Now this is of course C4H8, and let me draw another molecule with the same number of carbon and hydrogen atoms, but we know that it has different structure. So such molecules are known as isomers, and this is called isomerism. This one is but1ene because double bond is between first two carbon, and this one is but2ene. Both have formula, same molecular formula, but their structures are different. They are known as isomers. Okay. अच्छा जी, next हमारे पास है alcohols, carboxylic acid and esters, and I want everyone to stay focused because अभी इसके बहुत सारे questions भी आने वाले हैं. So let's begin with alcohols first. All right, so we have alcohols. अच्छा, उससे पहले guys you should know that we have important definition. Functional group की definition है, homologous series की definition है. Functional group is a atom or group of atom that imparts the chemical properties to an organic molecule. Or homologous series होती है class of organic compound that have the same functional group, shows similar chemical properties, and follows a trend in their physical properties. So we have 5 homologous series in our syllabus: alkane, alkene, alcohol, carboxylic acid, and esters, but only 4 functional groups. Alkane is the only homologous series with no functional group. Alkane का कोई भी functional group नहीं है. Alkene double bond, alcohol OH, carboxylic acid CO2H, and esters का क्या होता है? C double bond O and single bond O. So alcohols में बेटा होता है OH, इसका functional group है ROH. हमारे सिलेबस में एज ए मेंशन इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 एंड OH. मेथनॉल अगर तुम लोगे तो CH3OH होगा. डिस्प्लेड फॉर्मूला वो आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का पूछ सकता है, तो डोंट फॉरगेट टू शो द डिस्प्लेड फॉर्मूला, मतलब ओपन एवरी बॉन्ड एंड एवरी एटम. दैट इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ मेथनॉल. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सिलेबस में एथेनॉल है, चलिए उसका भी डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको बना देते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव इन एथेनॉल. अच्छा, एथेनॉल में वी वुड हैव 2 कार्बन्स और OH कहीं भी लगा दो, ये मैं लगा रहा हूं, और दिस इज योर द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एथेनॉल बनेगी कैसे, हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर अल्कोहल. सो मेकिंग ऑफ एथेनॉल इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. इसका फॉर्मूला है C2H5OH. देयर आर 2 ways to make ethanol. You know what? One is from ethene, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं. You need to mix steam into it under the same condition as I mentioned, 300 degree, 200 degree, 60 atm, and phosphoric acid added product. You will only get ethanol. No other product is made since this is addition reaction. And the other way of making ethanol is from glucose, C6H12O6. This is called fermentation. इसको हम क्या कहते हैं? This is known as fermentation. The important condition of fermentation is yeast, and the temperature required is room temperature, 25 to 35 degree, and no air, absence of oxygen is needed. If you increase the temperature, वो पूछ सकता है what will happen if you increase the temperature. If you would increase the temperature, this yeast will be killed off. Yeast is an enzyme, it will be denatured. I hope the doctors can relate. Yeast will be denatured, and if you will supply the air, this ethanol will be oxidized. Glucose hota है, it will be oxidized itself. So no air, yeast, and 25 to 35. मुझे ये बताओ कि this is clearly not an addition reaction. If this is not addition, what else would you get? Ethanol. Fermentation में ethanol के साथ क्या बनेगा? What would you get along with ethanol? What is the other product in this reaction? In fermentation, excellent, you will get carbon dioxide. So fermentation का बाय प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, it is carbon dioxide. सबको समझ आ गई? I mean, you should know the advantages. इसका advantage ये है कि you see, no, it is very cheap, less, इसके जो reactant हैं, they are renewable, cheap process. At the same time, ये बहुत slow है. जो ethanol बनता है, that is not pure, more labor is required, और ये batches में करना पड़ता है. This is fast, pure alcohol बनता है इसमें. अच्छा, alcohol once made, ethanol अगर बन गई है, alcohol once made, it can be converted into esters. One of my favorite reaction. Esters में कैसे change करेंगे इसको?
this is for general alcohols, not for ethanol only. Methanol, ethanol, propanol, butanol, कोई भी alcohol है, it can be converted into esters by reacting it with carboxylic acid in the presence of acid catalyst. Usually हम sulfuric acid लेते हैं. कोई आपने रूम टेम्परेचर हीट इसको कुछ नहीं करना, जस्ट प्रोवाइड द रूम टेम्परेचर, एड कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यू विल गेट एस्टर. अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं बेटा जिनका फंक्शन ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी सिंगल बॉन्ड ओ. हाउ वी कैन मेक एस्टर्स? फॉर एग्जांपल, एस्टर्स को जरा सब लोग गौर से सुनेंगे. आई नीड योर अटेंशन एवरीवन. सो एज आई जस्ट सेड कि एस्टर्स बनते हैं व्हेन this is the functional group of esters. Now esters have literally two parts. एक part इसको आपने एस्टर को ना यहां से कट करना है. ये जो मैंने बताया ना, ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है इस साइड पे भी हो सकता है, इट कुड बी ऑन द अदर साइड. जिस साइड पे भी होगा, जस्ट स्लाइस इट फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन वाली साइड है ना, दिस इज फ्रॉम अल्कोहल. ये कहां से आई है? अल्कोहल से. लेट्स इमेजिन आई पुट 2 कार्बन ऑन दिस साइड एंड 2 ऑन द अदर साइड. अब आपने इसको स्लाइस कर दिया, सेंटर से कर दिया सबने स्लाइस. अब जो मैंने कहा कि ये जो साइड है ये कहां से आई है? ये साइड आई है अल्कोहल से, और द अदर साइड इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अब अदर साइड में ये वाली चीज इज मस्ट, ये दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब मुझे बताओ, इफ दिस साइड इज फ्रॉम अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल, विच अल्कोहल इज यूज्ड टू मेक दिस एस्टर? This is ethanol. Excellent. But Her Royal Highness Ma'am Momina, this is not ethanoate. This is not ethanoate. Look at this side. How many carbons do we have? How many carbons? So alcohols कितने बेटा इसमें? alcohols कौन सा यूज हुआ है? Definitely ethanol. और ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा यूज हुआ है? Because since we have 3 carbons, तो 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? Propanoic acid. अब now we are supposed to write the name of the ester. So we start with alcohol. Alcohol कौन सा है? Ethanol. So the name of this very ester would be ethyl propanoate. Sense everyone? Yes, सबको समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, इमेजिन अभी लास्ट टाइम इस बार जो आया हुआ था अभी 25 जून में, बिल्कुल अ ईयर बैक, उसने यहाँ पे 4 कार्बन ले लिए. अब मुझे बताओ विच अल्कोहल इज यूज्ड? You can attach all the hydrogens, but which alcohol is used now? कौन सा alcohol है? This was a reaction question just from the this. I said alcohol, Memuna. If you're the same Memuna, which I know. Okay, so which alcohol? I mean, I said name of alcohol. Alcohol. Which alcohols? Please tell me the name. Yes, that is what I was waiting for. Maham said, sir, this is butanol. And many students wrote butanol and everyone lose the mark. Because this is not butanol. मैंने classes में बताया हुआ है आपको. Because butanol exists in 2 isomers, तो ये वाला कौन सा butanol है? किसके साथ OH लगा हुआ है? With the first carbon. अगर मैं इसको स्लाइस करूं, इमेजिन मैं इसको स्लाइस करूं 4 कार्बन और यहां पे OH लगा दूं, अभी भी तुम लोग इसको ब्यूटेनॉल कहोगे या कुछ स्पेशल नेम दोगे इसका? दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल. तो बच्चों के मार्क्स कटे अभी रिसेंटली, जस्ट लास्ट समर में. तो प्लीज मेक श्योर इफ इट इज प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, बिकॉज इन्हीं में आइसोमर्स है ना, तो राइट प्रोपेन 1 ऑल एंड राइट ब्यूटेन 1 ऑल इंस्टेड. ठीक है, सबको समझ आ गई मेरी बात? सो फॉर दिस एस्टर इट हैज टू बी इथाइल प्रोपेनोएट. एस्टर्स क्या लोग होते हैं? दे आर फ्रूटी, they have sweet smell, they are used in artificial flavoring, candies, chocolates, everywhere. Esters, perfumes बनते हैं एस्टर्स के. डन. तो एस्टर्स की गेम सबको समझ आ गई. एज जिसका कोई यूज समझ ना आए बस लिख दो इट्स यूज्ड एज सॉल्वेंट. ये मैंने बताया हुआ, बट यू शुड नो द यूजेस. बट अगर आपको किसी चीज का यूज समझ नहीं आ रहा है, जस्ट पुट दैट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, चल जाएगी बात, लेकिन आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. हाँ जी, अल्कोहल्स के अपनी ऑक्सीडेशन तो पड़ी नहीं. अच्छा, एथेनॉल या एनी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अच्छा, ऑक्सीडेशन हम करते हैं विद KMnO4. KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट KMnO4 शुड बी, KMnO4 को किस कंडीशन में यूज करते हैं?
it should be acidified under acidic condition. वो आपसे पूछ सकता है under what condition KMnO4 is used. So KMnO4 is used in acidic conditions. Thank you, sir. Okay, so now alcohols are oxidized to form carboxylic acid. So we can have carboxylic acid. So you can have carboxylic acid from alcohol upon oxidation with, come on. कभी कभी ये भी आपकी तरह बात नहीं मानता है. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O and OH. You have like carboxylic acids क्या लोग होते हैं? They are weak acids. What is weak acid? Acid that partially ionizes. This is very famous. What is the name of this ester? This carboxylic acid. क्या नाम है इसका भाई? क्या नाम है? Ethanoic acid. So whenever you show a symbol equation for the dissociation of a weak acid, you will write a double arrow. डबल एरो के बाद क्या लिखना है? ये इस H प्लस से आपकी दुश्मनी है, इसको आपने ब्रेक करके लिख देना है अलग H प्लस, एंड द अदर वन, अदर बाकी जो भी स्ट्रक्चर है उसको आपने -1 यही लिखा -1. आयंस आर ऑलवेज एक्वस, एसिड तो होता ही एक्वस है. yes make sense everyone. इसको आपने, you just need to remove this hydrogen, no matter if it is methanoate, methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid. You just need to remove, because every carboxylic acid would have this beautiful COOH. So जो भी पीछे लगा हुआ है, don't worry about that. Just remove that H and write everything with negative sign. That's how you're going to show that the acid is weak acid, by showing this, reversible arrow. It is weak and it is acid. Acid because it loses H plus sign, and weak because it is partially ionizes. And we know that the pH of weak acid ranges from, what would be the pH of weak acid? It is somewhere 9 for strong. Oh, sorry, weak acid hogi 4 to 6, and strong acid is, pardon, it has to be anywhere, but it should be less than 7. Yeah, excellent. Right. अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनको हम एस्टर्स में कैसे चेंज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर्स में कैसे चेंज करेंगे? कैसे? कैसे? यस, बाय रिएक्टिंग विद अल्कोहल. अगर अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे. लेकिन आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बहुत मजे मजे के रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में. तो चले, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आई वांट एवरीवन to react this molecule and get me the products. The products, carboxylic acid. This is an acid. What is it? This is an acid reacting with metal carbonate. You have 20 seconds, everyone. The products with the state symbol. Periche, calcium propanoate. Excellent, but I would love to see the structure. That's an excellent answer. Okay, let me explain for those who are still wondering. मेरे जैसे जो बैठे हैं इधर. See, acids are always aqueous. And metal carbonate is always, metals are solid, metal oxides are solid, metal carbonates are solid. Now look at this, the skill that will help you to get salt, no matter what. ये जो metal होती है ना, metal, it will kick the hydrogen, as I mentioned. Hydrogen of acid will be kicked. जब इसको kick लगी, तो what are you left with? You are left with CH3, CH2, COO negative. COO negative, right, Ibrahim? And then we know that it is the calcium that is going to kick. So calcium is in group 2. The charge will be +2. And this whole thing is -1. What would be the formula? What would be the formula? The formula is you need to cross the numbers. Cross the numbers. So cross ऐसे करना है प्यारे बच्चों. I'm talking about प्यारे बच्चों. Just put a bracket, because 2 आपने सिर्फ इसके साथ नहीं लिखना. You just need to show the 2 with the whole thing. इसकी पैकिंग करनी है, अच्छा सा गिफ्ट बनाना है.
and you can write calcium after, or you can put calcium here as well. So we have to, the name of this, कैसे name करते हैं salts को? How to name the salt? Starting with the metal. जिस तरह NaCl. What is the name of NaCl, guys? Is it chloride sodium or sodium chloride? Sodium chloride, because sodium is a metal. So here, but this calcium is a metal. It has to be calcium, and then how many carbons? How many carbons? 3 carbons. Propanoate. तो prop से क्या होगा? Propanoate. Had there been 2 carbons, it should be ethanoate. 1 carbon, methanoate. 4 carbons, butanoate. Thank you, sir. This is calcium propanoate. And the byproduct are, since this is carbonate, what are the byproducts? The water and the beautiful one and only carbon dye, which turns lime water milky. But how would you test this? Colorless, odorless, but very essential for our survival. How would you test this liquid, guys? I'm talking about how would you test the presence, not the purity. Excellent. We have 2 chemicals. We can either use cobalt anhydrous cobalt 2 chloride, or anhydrous copper 2 sulfate. Don't forget to put the 2 with both of these when you write the name. ठीक है? समझ आ गई सबको? समझ आ गई? सर ने तो सिंगिंग शुरू कर दी भाई. All right. So far, I believe we have done some good amount of data as far as organic is concerned, because I know ये वो चैप्टर है जो आपके A को A स्टार में कन्वर्ट करने वाला है इंशाल्लाह, और A स्टार को पोटेंशियल डिस्टिंक्शन में कन्वर्ट करने वाला. और मैं आपकी जगह होता, मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं. नो मैटर आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री में एवरेज हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, या आपको लगता है कि आपकी बहुत परफेक्ट तैयारी है. मैं पेपर ओपन करता, पहला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह पढ़ के देखता, उसको सॉल्व करता, एंड देन राइट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चला जाता, विच इज ऑर्गेनिक. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन. बिकॉज होगा क्या कि द मोमेंट हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर इजी सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बॉन्डिंग शॉन्डिंग किया, एंड द मोमेंट हमने 3-4 क्वेश्चन किए, हम थक चुके हैं. हम यहां से भी थक चुके हैं. तो जैसे ही आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स पे पहुंचोगे, आप इक्विलिब्रिया के क्वेश्चन पे पहुंचोगे, एंड द मोमेंट यू विल टच द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने बताया हुआ कि गोरा इज अ स्कैमर. उसने पहले से स्कैम रेडी किए हुए आपके लिए. यू आर ऑलरेडी टायर्ड. So what would you do? You will just want to get rid of the questions. So it's better to solve the questions from organic. I know आप कहेंगे सर वो तो मुश्किल है, हमारा मोमेंटम टेस्ट. नो, आप फ्रेश माइंड से जाओ, आपने तैयारी की हुई है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, just solve the first question and start solving the paper right from the last question. But make sure कि आपकी टाइम मैनेजमेंट का इशू, उन लोगों के लिए जिनकी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेते हैं. ये ना आप लास्ट क्वेश्चन करो और पहले वाले क्वेश्चन के लिए जो इजी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेट ऑफ रिएक्शन, के लिए टाइम ही ना मिले. सो ये उन लोगों के लिए हाईली वर्केबल है, दोज who have good time management skills and they just want to avoid those silly mistakes and scams done by the Cambridge, they're scammers. So organic में scam करेंगे और वो आपके साथ रेट रिवर्सिबल में स्कैम करने वाले हैं, आपके साथ नहीं करेंगे इंशाल्लाह. वी हैव दोज एवरीथिंग इन कमिंग सेशंस एंड टुडे. सो बैक टू द टॉपिक. एस्टर्स भी कर लिया हमने. एस्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो you will get to know कि एस्टर्स में क्या. आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग. अल्कोहल्स हो गए, यू शुड नो द मेथड प्रोब्यूट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. वीक एसिड्स होते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल कार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. वैसे तो बाकी भी सारे. नाउ this is about one and only, the most important, polymers. Polymers. Polymers are the large molecules. The large molecules formed by joining the small, the nano molecules called monomers. So polymers हमारे पास होते हैं variety of types के. What is that variety? We have I'm talking about polymers right now. We have natural. देखो ये बहुत कम बार आया हुआ है, लेकिन जो चीज बहुत कम बार आती है ना, मुझे लगता है वो इस बार आ जाएगी.
लेकिन नहीं भी आ सकती है, हमें गैस ही दे सकते हैं हम। नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीमर्स, राइट? नेचुरल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन लोग होते हैं? दी मैन मेड। नेचुरल कौन से होते हैं? नेचुरली एग्जिस्टिंग। द ओनली एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर इज प्रोटीन। एंड सिंथेटिक में वी हैव लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स: नायलॉन, पेट, पॉलीइथीन, एंड व्हाट इज द अदर वन? क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? पीवीसी, राइट? Okay, now we have types of polymerization. Polymerization. What is polymerization? It's a process in which the monomers combine to form a polymer. It's a process in which monomers combine to form polymers. So we have variety in polymerization. You have addition polymerization, and your favorite, which you will definitely see in the exam, that is condensation. What is it? Condensation. Let me give you a hack for addition. एडिशन की कंडीशन ये है, एडिशन की कंडीशन ये है कि ये कौन लोग देंगे? कौन लोग बनाएंगे एडिशन पॉलीमर? द वन विद द डबल बॉन्ड, ओनली एल्कीन्स, unsaturated. If there is no double bond, there is no addition polymer, right? And the example of addition polymers, abhi past papers mein exact questions aane wale hain, so don't worry about that. So PVC, polyethylene. This is just a quick review. I know you understand कि और ये document moment before paper भी आपके काम आने वाला. So you will get this in your car when you will be heading toward. Dear students, please sit on your seats. जब वो इस तरह की आवाज आएगी ना, तो dear students, all right. So polyethylene, इसके what are the मसले? What are some of the common मसले? क्या मसले हैं इसके? The मसले of addition polymers. The मसले मसाइल is they are नहीं, scams तो नहीं कहना चाहिए, they अच्छे लोग हैं। I mean, मेरे रूम में और आपके रूम में जहां आप लोग बैठे हुए, if not 100%, if not 90%, at least more than 50% things are made up of plastic. So you cannot ignore the importance of plastic, right? At the same time, it is causing harm to the nature. I mean, landfill sites, you burn it, it produces toxic gases. You put it in water, it will be toxic for the marine life as well. So you have a lot of masle for that. Condensation polymers. Condensation ki, what are the examples? We have nylon. All right, we have nylon, we have PET, and we have protein. The good thing is, if you want to make nylon, you need, what do you need? You need dicarboxylic acid. What is dicarboxylic acid? A box. Whenever there is a box that contains CO2H on this side and CO2H on this side, this is your carboxylic acid, which is di. Box represents the carbon atom, no matter jaise bhi likha hua hai, this is carboxylic acid. But if you want nylon, what you would react dicarboxylic acid with? Dicarboxylic acid को किससे react करोगे भाई? किससे react करोगे भाई? डाइइमाइन से। मैंने कहा डर ना जाएं आप लोग कि सर ने क्या बना दिया है. Let me fix this. Otherwise, it was perfectly okay. So if you want nylon, you would react it with diamine. What is diamine? What is diamine? What is diamine? Diamine. What is the formula of ammonia? NH3. So diamine hogi when you have NH2 here, NH2 here. But if you want PET, what is PET? It's not your PET. It is polyester. 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 Don't worry, सब कुछ मिल जाएगा. Don't worry. Focus is what is required right now. Okay, so dicarboxylic acid के साथ अगर आपको PET चाहिए, तो आपने किसके साथ रिएक्शन करना है इसका? You just need to react it with ester. बनाना होगा तो क्या रिएक्शन करते हैं? Esters बनाने के लिए what do we need? Carboxylic acid and alcohol. So PET is actually ester. PET में कौन सा लिंकेज होता है? PET में होता है ester linkage.
एंड नाइलॉन में कौन सा लिंकेज है? एमाइड. द नाइलॉन इज पॉलीएमाइड. So does your favorite protein. This is the polyamide as well. बट प्रोटीन कहां से बनती है सर? ये तो फिश से बनती है, ये तो चिकन खाने से बनती है. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अमीनो एसिड से बनती है. बॉक्स, carboxylic acid here, and on the other side of the box there is amine. तो एक तरफ इमाइन है बेटा, इमाइन, एंड एक तरफ एसिड. दिस इज अमीनो एसिड. But the good thing is, what you need to understand, the which you need to understand is, we need to react. Doctors, where are you? We need you doctors to understand the amino acids. I hope all the doctors here, they know that every box has to be different. Every box should be different in amino acid, because amino acid are of variety of types. So you have to differently just shade this. So कैसे बनाएंगे polymer? Just remove H here and OH here, and H from this side and OH from this side, and write nitrogen with hydrogen, and then the box, and then carbon double bond. Now this C will be bonded to the nitrogen. Look at this. Don't change anything else. They are super easy to draw. ऐसे किया सबने? ऐसे ही किया. Thank you, sir. Yes. Okay. Ready to solve some of the most important. यार यहाँ पे मैं वो ऐड करना भूल गया. कैन यू प्लीज इस नोट्स में, क्योंकि आपकी ग्रैंड रिवीजन के नोट्स हैं ये, तो इसमें यू शुड नो दी होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन और इसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स along with the functional group, the atom or group of atoms that imparts the chemical properties to a homologous series. किसी भी homologous series की properties कौन decide करता है? फंक्शनल ग्रुप. अगर OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, CO2H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड O, it's ester. Thank you, sir. So now I want everyone to look at this and fix this. Question number 1, all the questions, part A, B, and C, D, C, D, A, B, C, D. सब लोग कर रहे हैं. You can, if you're not, it's not visible, you can find the notes in the group. हर किसी के ग्रुप में पढ़े हुए. Question number 1, D तक कर रहे हो तुम लोग. I'll explain, and I want everyone to try. हमारा टाइम 9 तक जा सकता है, so manage your time accordingly. And this very question for all of you, this very question is from the most recent paper, March 2026, literally 2 months back or a month back. So you can better understand the mind of the examiner. I mean, जो जिसने अभी पेपर सेट किया हुआ है या करेगा आपके लिए, कर दिया हुआ है वैसे.
Done. Should I explain now? All right. Okay. So the basic thing what you need to understand is, okay, please read the entire question closely. Read everything with the complete presence. A, B, C, D are the first four members of the family with a similar chemical properties. किसी भी homologous series के first four members. And this table gives either the molecular formula or the name of A, B, C, D. अच्छा ये आपको उसने A दिया हुआ. It has how many oxygens? Two oxygens. In our syllabus, we have only two homologous series that have two oxygens. And what are those? Either it is carboxylic acid or it could be an ester. अच्छा जी. B is propanoic acid. This is meth-probute. State the term given to the family of organic compounds with similar chemical properties. क्या कहते हैं family को? Homologous series. Why members of homologous series similar chemical properties? I just said similar chemical properties are due to the same functional group. पूरी बात लिखनी है आपने. State the general formula of the family of organic compound. कौन सी family है ये? This is carboxylic acid. What is the general formula? This is the only homologous series with the general formula which have one carbon. This is part of the general formula. CN H2N plus 1 and COOH. ऐसे किया सबने? It's COOH. Correct? Thank you, sir. Name of A. What is the name of A with one carbon? It is methanoic acid. Structural formula लिखना है हमने. तो structural formula में you just write every carbon separately. Structural formula में बेटा CH3 CH2 COH और इसमें CH3 CH2 CH2 and CO. ऐसे किया सब प्यारे बच्चों ने? Yes. Yes. Thank you, sir. Name the alcohol which is oxidized to form C. We just learned that alcohols can be oxidized to form carboxylic acid. So if you want propanoic acid, what alcohol is needed? This is propan-1-ol. 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 तो propanol वाले बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पे. Propan-1-ol. Propan-1-ol is oxidized to give you propanoic acid. Give the chemical name. क्या नाम है इसका भाई? What is the name? This इसका नाम बताना है. इसका नाम acidified इसका नाम तो नहीं है ना बेटा. Potassium. यहाँ पे I guarantee 90% मैंने बताया हुआ आपको सबको जो those over there in the previous classes. Potassium manganate. मैंने बताया था ये तुम लोग लिखोगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं. क्रॉस. क्या बताया था मैंने? पोटेशियम मैंगनेट के साथ क्या लिखना है? 7. किस किस को पता है? 7. पोटेशियम मैंगनेट का 7. यहाँ पे Mn का चार्ज क्या है? 7. कैसे सर आपको कैसे पता चला Mn 7 है? Look at the screen. Oxygen is -2. We have 4 oxygen. कितना हो गया? -8. So we want to make it 0. Potassium is +1. तो 0 करना है तो Mn का चार्ज क्या होगा? क्या होगा? ये तो +7 होगा. That's why this represents the oxidation state of manganese. जल्दी से आ जाएं, जल्दी से शाबाश सब लोग. Get all 16 and fix these questions as well. We are done with organic, but we have a lot of good questions to discuss, by the way. See, with every past paper question, you get to know something new. And that is why past papers are very, very important. Twenty seconds.
I mean, propanol is this is actually propanol because, but the thing is, there are isomers and there is a variety in the propanol. So it could be propan2ol. तो फिर क्या लिखेंगे? फिर तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना. तो मेक श्योर कि यू शुड राइट द क्लियर प्रोपेन वन ऑल. हमारे सिलेबस में वन ऑल ही है, तो मेंशन वन ऑल. लेकिन टू ऑल भी तो आइसोमर्स में है ना बेटे? यस मामा. आमना क्या पूछ रही है? व्हेन डू यू राइट प्रोपेन? आपने बस आइसोमर्स में लिखना ही प्रोपेन वन ऑल है. आई मीन इसमें. Right? Done, everyone. Thank you, sir. Okay, I'll start with this beautiful ester, which I want everyone to learn. I know सबको आता है, लेकिन जिस किसी को नहीं आता वो सुन ले कान खोल के मेरी बात. मैंने बताया हुआ कि start with alcohol. कौन सा alcohol है ये? Which alcohol? Ethanol. The name will be ethyl. And which carboxylic acid? Butanoic acid. The name of ester made will be ethyl and butanoate. Sense everyone? How to draw? जब भी एस्टर ड्रॉ करना है, सब लोग कान खोलें, मुंह बंद करें और सामने देखें. जस्ट पुट सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी सिंगल बॉन्ड ओ. लिख लिया सबने? यस सर. एक्सटेंड द लाइंस. नाउ लुक, हाउ मेनी कार्बन्स डू वी हैव ऑन आयल? हाउ मेनी कार्बन विद आयल? 2 कार्बन. इट इज इथाइल. तो वो किसके साथ आएगा? वो इस ऑक्सीजन के साथ आएंगे. कितने कार्बन? 2 सर. Every carbon make 4 bonds. इसका एक बना हुआ है, put 3 hydrogens. इसके 2 बने हुए, let's put 2 hydrogens. Now we need 4 carbons. I said इसको यहां से slice करना है. अब other side पे 4 carbon होने चाहिए. 1 carbon is already there. How many more carbons? We need 3 more. 1, 2, 3. Every carbon shall be bonded to 4 bonds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Thank you, sir. This is your ethyl butanoate. Circle. Identify the ester linkage. Here is the ester linkage. Done. आपको समझ आ गई? Yes. ऊपर तो डिस्कस ही नहीं किया हमने. So what are the 2 conditions needed for the oxidation of one condition? अभी पूछ लिया ना उसने. Acidified KMnO4 and you need to heat a little. थोड़ा सा हीट कर दो, एसिडिफाइड कर दो, और सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या क्या रहे हैं? अल्कोहल से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. या आई मीन हीट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. दैट्स इट. The type of catalyst needed, कौन सा? D reacts with ethanol to form an ester. The type of catalyst अभी बताया, कौन सा? एसिड. इनफैक्ट मैंने तो नाम बता दिया ना आपको. मैंने तो कह दिया लिख दो सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट. तो इसमें क्या लिखना था आपने? यहाँ पे उसका नाम लिखना था और यहाँ पे लिखना था water. How do we name it in British accent? Water. पता नहीं इंग्लिश हमें पढ़ाई टी and then they skip the T. I don't know what's wrong with those goras. Water. Now this is polymers which form water. So please, monomers. Name the 2 monomers, guys, and name the small molecule and draw the structure of PET. Everyone, please. टाइम लगा है मुझे आपके लिए क्वेश्चन ढूंढते हुए, ऐसे नहीं मिल गए. इसलिए आप तो करेंगे इंशाल्लाह. यू विल फील गुड आफ्टर द एग्जाम. हाँ, ये तो वैसे रीसेंट पेपर के 26 के. सर असफंद यार खान. Okay, complete the page, the whole page. Hmm. Twenty seconds. We have done literally everything few minutes ago. Okay.
Two types of monomers. I just mentioned we have dicarboxylic acid and this is diol. तो आपने लिखना है dicarboxylic acid and diol. The name the small molecule. The two monomers react to make ester and one small molecule. Name the small nano. This is water. Draw the structure of PAT. Two repeat units. All right. All right. So you will draw a box. This has to be your, it's a box on both sides of the box. This should be on both sides of the box. There has to be carbon double bond oxygen and then oxygen, box oxygen, right? This is one repeat unit. What is it? One repeat unit. How did I get this? Look at this. You remove the H from this and OH from this. When you get rid of this, OH from this and H from this. So what are you left with? You're left with C double bond O, an open bond, and then a box, dark box, and then this. Now this carbon will be bonded to the oxygen. Oxygen bond, box, oxygen. This is one repeat unit. सबको समझ आ गई? Second repeat unit कहाँ से आएगा? Sir, what is, how do we know the structure of second repeat unit? ये देखना भी बताता. ये देखना भी बताऊंगा second repeat unit कहाँ से आएगा. ये देखो, वही copy किया और literally as it is attach कर दिया. That's, you can't do this by the way when you're on your paper. See, I'm in a habit of writing on the screen. Sometime while I'm writing on the paper, तो वहाँ पे भी मैं copy कर रहा होता हूँ, zoom कर रहा होता हूँ. Then I realize कि ये copy तो नहीं है भाई. I mean, ये tab तो नहीं है. Okay, so this is one repeat unit, and literally मैंने यहाँ से उठा के दोबारा सारा repeat कर दिया है. देखो, ऐसे किया? Yes. State 2 environmental challenges caused by this. PET is plastic, hard plastic. You better understand what are the challenges with the plastic. One condensation polymer, that is polyimide. हमने अभी two polyimide पढ़े. What are two polyimide which we have just learned? We have learned two polyimide. One is protein and one is nylon. Thank you, sir. Done. चलिए ये वाला कर लें. Question 3 on my request. Then we have a lot of questions. ये polymers ये फिर खुद से कर लीजिएगा. I just want everyone to solve question number 3, just this page, the page, because we are a little late than our अभी 8:30 तक तो हमने सब कुछ complete करना था, but I believe we are doing more papers, that's why. But anyhow, question 3 कर ले, then we still need to work on equilibria, and I hope मैं आप लोगों को bore नहीं कर रहा हूँ. We are actually doing some quality work right now. Shabash. Complete the entire page, guys, and then we'll continue with the reversible and redox. And now, alhamdulillah, and now you will finally learn how to write ionic equation, the famous iconic equations, the shifting of equilibria, and the redox equations, and the rate. Rate में तो हमने copy कर लेना answer. Copy. Like literally जो भी आएगा बस तुम लोगों ने copy मार देना सीधा सीधा. सर ने कहा copy. $20 seconds. Done. Harish is done. So, back to the discussion. Read the statement, guys. Everyone, read every question closely. Shows the displayed formula of unsaturated carbon. देखो ये unsaturated भी है. Two important things, unsaturated भी है, carboxylic acid भी है. हमने तो सर पढ़ा था unsaturated hydrocarbons, but ये क्या चीज है unsaturated carboxylic acid? That means it has a double bond and it has a carboxylic acid as well. Thank you, sir. Why it is unsaturated? It has पूरी बात लिखनी है, but I just,
आपने पूरी बात लिखनी. It has a carbon-carbon double bond. So what would you observe? You put the double bond, I mean you put the bromine aqueous. आपने लिखना है the orange color of bromine. क्योंकि इनिशियली मुझे बताओ ये ऑरेंज कलर था किसका? किसका ऑरेंज कलर था? Was the orange color of the structure or the orange color was of bromine? तो फिर you can't write orange color goes colorless. इसका कलर तो था, it was already colorless. If you will mention orange colorless और पेपर आ गया मेरे पास आपका चेक होने, मसला हो जाएगा आपको. So आपने लिखना है orange color of the bromine. Orange color of the bromine goes colorless. Okay. Weak acid, अभी बताया weak acid, acid that partially ionizes. Acid that partially, और weak भी है acid भी है. तो substance that partially ionizes to produce fewer H positive ions, partially dissociates. Acid that partially dissociates bromine turns bromide, which is पता नहीं क्या लिख दिया मोहम्मद अली. थोड़ा सा क्लियर करके लिखो, मुझे समझ आनी चाहिए. नेम द गैस फॉर्म इन दिस रिएक्शन. कार्बोनेट. हाँ, यहां पे फंस सकते हो तुम लोग. आई मेंशन गोरा इज अ स्कैमर. ये पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्कैम किया, कहते हैं हम बिजनेस करने आए, स्कैम करके गए, हमारे साथ सारा कुछ लूट के ले गए यहाँ से. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने लिख देना CO2 और पेपर अगर मेरे हाथ आ गया मसला हो जाएगा तुम लोग. क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है ये? क्या है ये? क्या लिखा हुआ है ये? नेम. राइट द नेम गाइस. क्लोजली पढ़ना है सारे क्वेश्चंस. All right, how the ester is prepared from X. That's an important question. All right, let's learn how to make an ester. So we have this carboxylic acid. उसने कहा कोई भी एस्टर बना दो. ठीक है, बना देते हैं, कोई मसला नहीं है. इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें अब मैं ऐड करूंगी, हम कुछ बना रहे हैं ना, यू नो, इसमें ऐड करेंगे, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्कोहल ऐड करेंगे, एथेनॉल ऐड कर देते हैं. In the presence of ester, I mean sorry, carboxylic acid, yeah, memuna, and then you will get, how do we know कि ester बन गया है? कल मैंने A levels के बच्चों को बताया, वो भी ऐसे बैठे हुए थे, कुछ बस ऐसे देख रहे थे जिस तरह एयरपोर्ट पे नहीं बंदा, you know, when you're alone at the airport and there are 15 hours stay, I can relate actually. and फिर इधर उधर देख रहे होते हैं, अब क्या करूं, कैसे पता चलेगा परिशे, कैसे पता चलेगा? परिशे loves perfumes. उसको पता है कि the moment esters बनेगा तो you will get fruity smell. You will not get the fruity smell, but you will feel that fruity smell. So आपने mix करना है in the presence of that mighty king of chemicals. Mighty king of chemicals. You know, sulfuric acid is known as king of chemicals, right? And you will get the fruity smell. Wow, the fruity smell. The fruity smell. कर लोगे खुद से कर लोगे भाई? हो जाएगा ये. पॉलीमर्स जरा कर लेना फिर. पता नहीं, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि तुम लोगों को ये करना चाहिए. हम नहीं भी कल होगा तो कल वो कर लेंगे, यू नो, कल मैं आपको करा दूंगा. सो यू नो, मैंने इंटेंशनली बहुत सारे पेज छोड़े हुए. आई वॉन्ट एवरीवन के वो कर लेते हैं हम लोग, सारी रिवीजन उसकी कर लेते. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हाँ इलेक्ट्रो तो मैं रिवीजन करवाए बगैर तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता सर. वो तो मेरा दिल है कि तुम वो सबके दिल में बैठ जाए, वो दिल में भी बैठेगा. वाटर इजंट, क्या लिखा हुआ है? डेमोन, डोरेमोन और व्हाट? अच्छा, एस्टर कैसे लिखना है? अभी लिखा देते हैं आपको, अभी बताते हैं. ये देखो, आपने लिखना है add a named add alcohol, कोई भी लिख लो, एथेनॉल लिख लो या मिक्स लिख लो, into x. x क्या है? x ये है, ठीक है, right. In the presence of sulfuric acid, catalyst. वैसे तो इसको ना ए लेवल्स में जो कंडीशन है, इसको हम स्लाइटली हीट भी करते हैं. हाँ, अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पता हो, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ ओ लेवल्स एंड GCSE. एंड देन मिक्स करो, थोड़ा वेट करो एंड सी that fruity smell. I know, Parishe, it's not you,
मैं भी जब था तो मुझे भी इक्विलिब्रियम समझ नहीं आया था पूरे 3 years, बट देन समवन लाइक मी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हेल्प की डे बिफोर एग्जाम, एंड लिटरली आई फिक्स एवरीथिंग, एंड नाउ इंशाल्लाह हम इक्विलिब्रियम भी फिक्स करेंगे, इलेक्ट्रो भी फिक्स करेंगे। इलेक्ट्रो सुन लें जरा सब लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना ये इतनी आसान है, इतनी आसान है कि पता नहीं आप लोगों को आज तक क्यों इतनी कम्प्लेक्स पढ़ाई, या हमने क्यों इतनी कम्प्लेक्स पढ़ी। अब आप नेक्स्ट 7-8 मिनट्स चुप करके मेरी बात सुनेंगे, एंड यू कैन लिटरली प्रिडिक्ट एवरीथिंग एट एनोड एंड कैथोड। और आई थिंक जो लोग पहले से हैं, पढ़ रहे हैं रेगुलर, उनके लिए तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। नो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए भी होने वाला है। हाउ डू वी फिक्स? सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, the ionization of molten or aqueous ionic compound using electricity. You cannot electrolyte solid compounds because current does not flows through the solid compounds. अब इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले हम करते हैं मोल्टन कंपाउंड्स की। किसकी? मोल्टन। लेट्स से मोल्टन XY है। हमारे सिलेबस में 2 लोग मोल्टन है, मैं दोनों लिख देता हूं। NaCl है और लेड 2 क्लोराइड है। सबसे पहले आपने लिखने हैं इनके आयंस। ओके सर, Na प्लस है, Cl नेगेटिव। सर लेड तो किसी ग्रुप में नहीं है, हाउ डू आई नो द चार्ज ऑन द लेड? मैं बताता हूं, इधर देखो सब लोग। क्लोरीन का तो पता है ना भाई, या उसका भी नहीं पता? क्लोरीन -1, 2 क्लोरीन -2, तो लेड क्या होगा? +2। इट इज +2, लेड इज +2। सो एक चीज आपने मेरी रिक्वेस्ट पे करनी है कि प्लीज प्रिडिक्ट द आयंस, द करेक्ट आयंस विद द चार्जेस। तो ये आई मीन मैटर, ये नहीं मैटर करते सर। यहां पे आप 2 लिखे ना लिखे डजंट मैटर, हम बैलेंस थोड़ी ना कर रहे हैं। सो यू शुड नो द चार्जेस फर्स्ट। ओके, now guys, anode attract the anions, cathode attract the cations। अच्छा, इसमें ये होगा एनोड एनाइंस, तो इसमें है ही एनाइन, दोनों में एक ही है। तो whenever you see chloride roaming around anode, just make it Cl2, because ये तो Cl2 ही बनेगा। इसकी नेचुरल स्टेट है ही Cl2, and it will lose how many electrons? देखो इधर 2 है, इधर 2 है, तो यहां पे भी 2 होना चाहिए ना। ओके सर, 2 लिख दिया। 1 chloride will lose 1 electron, 2 chloride will lose 2 electron। This is the complete equation, guys. And those electrons, तुम्हें करते हैं इंस्टा पे फॉलो, मैं भी करूंगा। Those electrons will travel from anode to cathode। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? एनोड टू कैथोड, राइट। अच्छा, इधर फिर कैथोड पे क्या है? कैथोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे अट्रैक्ट कैटाइंस। और फॉर लेड देखो हमारे पास कौन सा कैटाइन है? इनिशियली वी हैड सोडियम। तो मेटल के लिए तो एक निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक क्या टेक्निक है वो? ये दोनों मेटल्स हैं। मेटल के लिए आपने देखना है व्हाट इज द चार्ज। क्या चार्ज है? +1। बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ये बना दो। इस पे क्या चार्ज है? +2। बस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और ये बस लेड बन गया। थैंक यू सर। तो दिस इज फ्रॉम मोल्टन। अब देखना हम करेंगे क्या, हमने किया क्या है। अब अगर इतना हमने मजदूरी ना करें, वी कैन डायरेक्ट। सम टाइम दे डोंट वांट अस टू राइट द आयनिक इक्वेशन, दे जस्ट वांट अस टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एट एनोड एंड एट कैथोड। सब कुछ बता रहा हूं, डोंट वरी। नाउ मोल्टन में द फर्स्ट वाले भाईजान is always product at cathode। फर्स्ट वाले भाईजान always cathode, सेकंड वाले भाईजान always anode, राइट। जो भी है XY is the molten substance। ये मोल्टन के लिए ट्रू है, मोल्टन के लिए ट्रू है। लुक, सो मोल्टन में सेकंड वाला ऑलवेज एनोड, फर्स्ट वाला ऑलवेज कैथोड। मैंने कहा प्रिडिक्ट द आयंस फर्स्ट। आयंस में पहले वाले कैटाइंस होते हैं, द सेकंड पार्ट इज ऑलवेज एनाइन, राइट। अब जो एनाइंस होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड, एनाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड। अब एनाइंस है हमारे पास क्लोराइड, जो भी एनाइन आएगा इट विल चेंज इनटू इट्स एलिमेंट। पॉसिबली कौन सा एनाइन आ सकता है? इट इज इधर द हेलाइड आयन, ये वाला, और हाइड्रोक्साइड आयन, नो अदर। एक है
ऑक्साइड आयन भी आता है, ऑक्साइड आयन भी आता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑक्साइड आयन कैसे आपकी हेल्प करेगा। वो सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में है। तो जब भी हेलाइड आएगा, इट विल फॉर्म क्लोरीन एंड इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ये है मोल्टन के लिए। अब आ जाओ जो एक्चुअल प्रॉब्लम आता है आपको। आई मीन electrolysis of dilute। डाइल्यूट के लिए तो तुम लोग लिख लो, क्या लिख लो? एनोड। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? लेट्स से डाइल्यूट NaCl है, लेट्स से डाइल्यूट कुछ भी है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कुछ भी है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब वो क्या है? एक्वस, पानी। डाइल्यूट का मतलब है पानी। तो डाइल्यूट में मैंने आपको बताया था, एनोड पे आपने ये इक्वेशन को याद करना है। OH will produce 1 oxygen, 2 water and 4 electron। ये बैलेंस तुम लोगों ने ऐसे याद कर लेनी, वहां पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या करना है? 1 2 4। लुक एट दिस, 4 1 2 4। So 4 hydroxide ion produced 1 oxygen, 2 water and 4 electron. 4 1 2 4. This is clearly oxidation, because anode pe there is always oxidation as we lose electron. Okay, so ions are always aqueous, oxygen is always gas, water is always liquid. This is literally true for all aqueous solutions, except when the solution is concentrated. When the solution is concentrated or concentrated, and if they have halide ions. For example, concentrated NaCl। अब concentrated NaCl में क्या है? ये concentrated है और इसमें हेलोजन आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर हेलाइड आयन जाएगा, फिर क्लोराइड will produce oxygen and 2 electron। तुम लोगों ने जो 3 months लगा के इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था ना, कि टोटल उसका यही है। डन। In all dilute solutions, you put this, right? In every dilute solution, we'll write this. What is this? Okay, so in all dilute solution, you'll put this. 4 hydroxide ion produce 1 2 4। याद रखो इसको। And then you will see the bubbles, of colorless gas. Okay, and for chlorine, you will see the bubbles of pale yellow gas. Okay, कैथोड, कैथोड। अजान हो रही है मेरे पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लिख रहा हूं, बट आई वांट एवरीवन टू लुक एट द स्क्रीन।
All right, I am back. I hope you all are here. And we were talking about the electrolysis. And a confirmed question, you will see a table, or you are supposed to write the ionic equations at anode and cathode, right? So let's start all over again. Whenever the solution is dilute, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, if it is not mentioned, it is understood, it is dilute aqueous. In dilute aqueous, you always write this equation, 4OH, 1, 2, 4. And if the solution is concentrated and they contain a halidine, I mean chloride or bromide, then that halidine, Br negative 2, 2Br negative will form Cl2 या Br2 जो भी है, and you will get those electrons going all the way from anode to cathode. And this is for cathode, for all the cathodes. But एक चीज का आपने ख्याल रखना है, whenever at anode you have this equation, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड से? 4. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी रेयर. सरन कहते हैं हमारी वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, यू नो, ये प्योर चीज यहीं से मिलेगी. तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये प्योर चीज यहीं से मिलेगी. तुम लोगों को जरा गौर से सुनो. सी, whenever you have at anode 4 electrons are getting, you are getting 4 electrons from anode, then at cathode the equation that you will build, you need to add those 4 electrons here. You need to add 4 electrons. You have to balance. This is one of its kind. Whenever you have OH at anode and hydrogen at cathode, this works only for that situation. जब OH यहाँ हो और hydrogen यहाँ हो, कैसे काम करेगा ये? Those electron will, you need to balance those. Okay. अब देखो यहाँ 4 electrons add करने, 1 hydrogen need only 1, तो फिर मुझे कितने H plus चाहिए? 4. तो 4H plus में कितने hydrogen बनेंगे? 2. That is important. Why? Why is that matters even? ये क्यों important है? This is important because you would see the bubbles of gas at cathode and you will still see the bubbles at anode. सर अगर ये हाइड्रोजन भी होता, अगर आप सिंपल इसको H2 लिख देते, फिर भी तो बबल्स ही होते. बट यही चीज पे तो गोरा स्कैम कर सकता है, आपके साथ कर सकता है. वो आपसे पूछेगा वेयर वुड यू सी मोर बबल्स. तो अगर आपने यहाँ पे सिर्फ H2 लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे भी 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, तो you will literally see the same amount of bubbles. But how now you know that you will get more bubbles at cathode and you will see half bubbles at anode. This works only when you have OH and hydrogen at cathode. भाई ये बात किसी की खोपड़ी में आई या नहीं आई? Yes or no? This works only when you have 4 hydroxide ion at anode, and we know that hydroxide ion loses 4 electrons. है क्या? हाइड्रोजन आयंस. सो हाइड्रोजन में जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस. What would you get? आवाज आ रही है सबको मेरी? Am I audible now? Am I audible now? Okay. I just said कि फाइनल टाइम सोने, अभी पेपर्स में, पास पेपर्स में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. Whenever there is hydroxide ion at anode, hydroxide at anode and hydrogen at cathode, तो फिर आपने ये इक्वेशंस लिखनी है जो मैंने लिख दी है. क्या मतलब है इसका? 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, all 4 should be added to 4 hydrogen ions to give you 2 hydrogen. तो देखो कितनी हाइड्रोजन बन रही है यहाँ पे? 2. तो मोर बबल्स बनेंगे कंपेयर टू ऑक्सीजन. यहाँ पे एक, यहाँ पे उसके आधे बबल्स बनेंगे. वो पूछ सकता है ये आपसे. But what if at anode, instead of hydroxide and the solution is concentrated and you have chloride ion, so you will get chlorine gas which releases how many electrons? 2.
तो फिर आपके पास क्या मिलेगा, फिर आप वही लिखोगे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, तो यू विल गेट ओनली 1 हाइड्रोजन, बट दैट इज वेरी रेयर। लेकिन ये आया हुआ एग्जाम है, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, इट वाज पार्ट ऑफ द एग्जाम, आई बिलीव समवेयर क्लोज टू 2019 और 18 के पेपर में एक ही बार आया है, और मेजॉरिटी बच्चे देख रहे थे छत का पेंट किस कलर का है, दीवार किस मटेरियल की बनी हुई है, एग्जामिनर ने खाना खाया नहीं, बिकॉज यू नो व्हेन यूर सिचुएशन, सो यू नो ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं करता हूँ, बिकॉज पास पेपर में क्वेश्चन इसमें डाले हुए मैंने। प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन किस चीज की करनी है, किसकी प्योरिफिकेशन करनी है भाई, प्योरिफिकेशन किसकी करनी है, इम्प्योर चीज की। तो इम्प्योर आपने अटैच करना है एनोड पे, उसी का प्योर आपने रेफरेंस लेना है कैथोड पे, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का लेना है, फॉर एग्जांपल हम प्योरीफाई कर रहे हैं कॉपर को, तो कॉपर इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर आपका एनोड होगा, प्योर कॉपर शैल बी योर कैथोड, और नीचे आपने उसी कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन लेना, इधर इट कुड बी कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट, राइट। सो ये आपने देखना है, समझ आ गई सबको बात। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इमेजिन आई वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट माय, क्या है ये, कैलकुलेटर, मैथ्स का पेपर है इसलिए दिखा रहा हूँ, लेके जाना है आप सबने, आई नो यू हैव, आई नो यू आर गुड एट मैथ्स। सो कैलकुलेटर पे आपने, हमने गोल्ड कोटिंग करनी है, वी आर रिच, वी हैव सम रिच बडीज इन द क्लास, एंड दे आर लाइक फ्रॉम शेख फैमिली से हैं, वो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं कि यार हमारे घर में तो गोल्ड का ये, हमारे पास तो गोल्ड का ये, हमने कहा चले हम भी लंबी छोड़ते हैं, सो वी वांट टू कोट, हमने उनको बताना कि हमने गोल्ड का इलेक्ट्रो लिया हुआ है, ये व्हाट इज दिस, कैलकुलेटर, सो वी वांट टू कोट दिस विद गोल्ड, तो जिस चीज के ऊपर कोटिंग करनी है दैट हैज टू बी एट नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, ये मैं नेगेटिव पे लगाऊंगा, गोल्ड की कोटिंग करनी है तो गोल्ड कहां लगाऊंगा, एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट शेल बी गोल्ड सल्फेट एक्वस, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है वो कैथोड पे जाएगा, जिसकी कोटिंग करनी है वो एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट ये हो जाएगा। समझ आ गई सबको, अच्छा जी, ओके। आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कंप्लीट दिस बॉक्स। जिस किसी ने करेक्ट नहीं किया तो मेरी गाड़ी में चपेड़े पड़ी हुई है, इंपोर्टेड चपेड़े मैंने मंगवाई हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी मंगवा के अप्लाई करूंगा, बिकॉज वी लिटरली डिड दिस सेकंड्स अगो, सब लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व। या इंपोर्टेड चपेड़े, यार तुम्हारा नाम बहुत खराब है, आंसर मैं कर देता हूँ बट प्लीज, व्हाट इज दिस, आगे तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है आपने, लेट मी सी। Oh, the last question. Does whether it ends up with cathode or anode depends on the reactivity? Yeah, I mean, that's a good question. When we have different metals, we need to check. But जब भी हमने प्योरिफिकेशन करनी है ना, तो आपने एनोड कैथोड, आई होप आपको समझ आ गई, इम्प्योर प्योर, और जिसकी चीज के ऊपर लगानी है दैट हैज टू बी लेस रिएक्टिव, दैट इज ट्रू, जिसके ऊपर लगानी है अगर वो भी मेटल है, दैट शुड बी लेस रिएक्टिव, दैट्स ट्रू। अब आप लोगों के माशाल्लाह जो है ना वो बड़े क्यूट नाम रखे हुए हैं आपने, लिख लिया सबने ही, मोहम्मद अली। मेरे मेरे फेवरेट नामों में से आपका नाम, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां करे। जितनी मैंने सुबह से क्लासेस पढ़ा रही है ना, इस टाइम मैं क्यूट नहीं हूँ, आई एम लाइक ऑफ, इस सीट पे बैठे हुए 8 o'clock में आया था, आई रिमेम्बर, मॉर्निंग में, एंड इट्स 8:50 राइट नाउ, 13 आवर्स जुमा पड़ा है बस बीच में। कर लिया सबने, डन। अब देखो यार मेरी बात सुनो सब लोग, डाइल्यूट है ये, ठीक है, कोई कॉपर वाली गेम भी नहीं है इसमें, तो एनोड पे क्या जाएगा, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ सिर्फ, आई नो कि उसने नहीं पूछी हुई, एनोड पे 4OH 1 ऑक्सीजन 2 वाटर
एंड 4 इलेक्ट्रॉन। हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखना था सर। द प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। कैथोड पे जिंक क्लोराइड है, डाइल्यूट है। ओके, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन। सर हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखना था, हाइड्रोजन। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लोरीन भी है, तो फिर एनोड पे मसला हो जाएगा। क्लोराइडाइन losing 2 electron to form pale yellow beautiful gas। और कैथोड पे तो कॉपर नहीं है, तो हाइड्रोजन ही जाएगा ना भाई, यही इक्वेशन बनेगी। 2H प्लस आइन। अब आपको समझ आई मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? अब जरा सबको समझ आ रही होगी, अब समझ आ रही होगी। ये देखो, ये है डाइल्यूट, राइट। यहां पे आएंगे हाइड्रोक्साइड आइन, राइट। हाइड्रोक्साइड आइन जाएंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन। ये है कॉन्सेंट्रेटेड। यहां पे क्लोराइड भाई जा रहे हैं, दे विल रिलीज। कभी जिंक का मैंने बताया आज तक? डिड आई मेंशन जिंक एनीवेयर इन माय वर्किंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ in dilute aqueous? Never. Never. Yes, Iman. ईमान कह रही कि सर स्लाइटली कंफ्यूज कर रहा है मुझे। एक बार फिर से सुनो, दुर्रे एंड ईमान एंड एवरीवन। So now we have hydroxide ion at anode. Hydroxide ion produces 4 electrons, and those 4 electrons shall be added to the cathode के protons. 4 electrons needs 4 protons and they release 2 moles of hydrogen gas. Okay. यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2. You need to balance, but this works only for hydrogen. But if you have any metal like copper or zinc or any, फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने, फिर हमने क्या देखना है? We just need to check the charge. फिर हमने देखना चार्ज, जो चार्ज है बस इलेक्ट्रॉन दो और जान छोड़ो। This is just for hydrogen कि हमने इलेक्ट्रॉन्स देखने। वाओ, what a critical point. अगर यहां पे सोडियम होता +1 तो फिर हम बस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते, बस दैट्स इट। सबको समझ आ गई बात मेरी? Powder reacts with iron sulfate। तो मेटल का लिख दिया ना मैंने कि मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बस वो ऐड करो। तो जल्दी से आ जाओ, मेरी बच्चे वेट कर रहे हैं। आई मीन नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स, तो टाइम काफी ऊपर हो गया, उनको आगे किया हुआ है मैंने, भूख बहुत लगी हुई है। ओके अच्छा, एक चीज आपको लास्ट में जाते हुए बताऊंगा। आयरन पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आयरन 2 सल्फेट। अच्छा, वो अगर आपसे इसका नाम पूछ लेना तो तुम लोग आयरन सल्फेट लिखोगे ना, तो तुम लोग आयरन सल्फेट लिखोगे तो वो कुछ नहीं देगा आपको, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स में डू मेंशन द चार्ज। आयरन का क्या चार्ज है यहाँ पे? सल्फेट तो कॉम्प्लेक्स है ना, -2 होता है, तो आयरन का क्या चार्ज है? देख लो यार, बाद में बातें कर लेना, सब लोग मुझे फॉलो कर लेंगे बाद में। ओके, सो 2+ और 3, 2+, देखो सल्फेट -2 होता है तो आयरन, तो इसका नाम होगा आयरन 2 सल्फेट। द एक्चुअल नेम इज आयरन 2 सल्फेट। ओके, अच्छा अभी तो देखो यार सब लोग प्लीज, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस है, यहाँ पे टाइम है। सो वी नो दैट इनिशियली ग्रेडियंट फास्ट है, लेस स्टीपर हो रहा है, लेस स्टीपर इवेंचुअली आपसे पूछ सकता है हाउ डू यू नो that the reaction is getting slower from the curve? You would say the curve is getting less steeper. वो जो कर्व है वो लेस स्टीपर हो रही, इवेंचुअली स्ट्रेट हो गई। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द फ्रॉम द स्टार्ट टू कलेक्ट 18? तो कहाँ पे 18? एक बॉक्स एक का 18 यहाँ पे 18 18 18 18 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे। हाउ डू वी गेट द स्मॉलेस्ट रीडिंग? इन दो का डिफरेंस डिवाइड बाय 10। तो आई बिलीव जो भी आएगा वो एक की रीडिंग होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आई थी, जो भी आती है वो आपने लिख देनी है। समझ आ गई सबको? लिख दूं? ये 18 है भाई, और यहाँ पे तो 0.4 डिवाइड बाय 10 करो, जो भी आएगा उस एक बॉक्स की रीडिंग है। एंड देन 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो भी आती है दैट इज योर। यस, ओके। सो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद 30। पहले कितने पे कर रहे थे? वी आर डूइंग एट 20, तो 30 पे करेंगे, इट विल बी मोर स्टीपर एंड यस, एंड पहले कंप्लीट होगा बट इवेंचुअली गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऑन द ग्रिड ड्रॉ कर दिया,
Describe using collagen how the rate of reaction changes as temperature increase. No matter if it is temperature, pressure, concentration, surface area or catalyst. One by one सब सारी चीजें सुन लो. Temperature increases the energy of the particles. Pressure push the particle closer, nothing to do with the energy. Concentration just increase the particles per unit volume. Surface जब powder करते हैं तो surface area increases, contact point increases, and catalyst lowers the activation rate. सब लोग different तरीके से rate of reaction को fast करते हैं. Temperature only which increases the energy. But her factor eventually led to the more frequent collisions. तो इसमें सब लोगों ने क्या लिखना है? The frequency of the effective collisions. ये golden sentence मैंने लाखों बार बताया आपको. Frequency of the effective, not the collisions, effective collision. Either वो increase होगी या decrease होगी, depends on the rate of reaction. Yes. So frequency of effective collision will either increase or it will decrease. It depends on the type of reaction. यहाँ पे see we are increasing the temperature, right? So frequency effective collision हम लिखेंगे particle gain energy and collide more frequently, and the frequency of effective collision increases. Pressure बढ़ाओगे, particle will push closer. More particle in a unit volume, frequency of effective collision increases. If you would powder instead of a lump or bada size particles, then you will again, the frequency of the effective collision will help you to answer this. Equilibrium सुन लो. I know आप लोग की बहुत important responsibilities हैं. Many things to do, exams भी हैं, घर भी manage कर रहे हैं तुम लोग. So yeah. But alhamdulillah, it's been 2 hours and I hope आप लोगों ने कुछ सीखा है और हमने आपको बोर नहीं किया. Honest opinion, कुछ आपको मजे की चीजें बताई हैं and which will help you inshallah on the exam day, and we'll be doing tomorrow and day after tomorrow. मैंने आपको पहले दिन कहा था जब हमने स्टार्ट किया था सेशन इन जनवरी I think कि we will predict the paper inshallah. मैं आपको बता रहा हूं कि हम कल तक 10 क्वेश्चंस लिख लेंगे आपके साथ और आप मुझे बताएंगे कि सर ये आया था. इंशाल्लाह 80 मार्क्स में से 55-60 मार्क हम प्रिडिक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, और विद प्रैक्टिस आप 20 मार्क्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वापस आ जाओ. एक्सोथर्मिक है. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. रिएक्शन क्या है? एक्सो. तो एक्सो का मतलब इसकी एंथैल्पी नेगेटिव है. सब लोग कान खोल के मुंह बंद करके सुनेंगे. रिएक्शन इज एक्सो, तो एंथैल्पी है नेगेटिव. अब नेगेटिव एंथैल्पी में बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है एक्सो, बैकवर्ड इज एंडो. सबको समझ आ गई? Whenever you increase the temperature, reaction favors the endothermic side. अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट पे. क्यों जाएगा? बिकॉज बैकवर्ड इज एंडो. बस 2 मार्क्स मिल गए आपको. डिक्रीज करेंगे तो इट ऑलवेज फेवर्स द एक्सोथर्मिक साइड. ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह नॉर्मली वी लव 25 डिग्रीज इन आवर रूम. इन द समर्स जिस तरह आजकल टेम्परेचर इज अबव, आज 43 था लाहौर में, तो our equilibrium will get disturbed. We want exact 25. तो हम AC ऑन करते हैं. वो हमें it releases the cold air, तो हमें वापस 25 चाहिए. In winters टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, 12 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री. We want 25 again, तो we will on the exothermic side. सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है. Whenever you increase the temperature, system will get disturbed. इस तरह हम डिस्टर्ब होते हैं गर्मियों में, तो वो एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा. जब तुम टेम्परेचर लो करोगे तो वो खुद से हीटर ऑन कर लेगा, एक्सोथर्मिक की साइड में जाएगा. समझ आ गई सबको? अब देखो, व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ एथेनॉल इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज. तुमने इसको ठंडा कर दिया, डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया तो किस तरफ जाएगा? एक्सो में या एंडो में? डिक्रीज करने से इट ऑलवेज फेवर्स द एक्सो. इसमें एक्सो है राइट, तो अमाउंट ऑफ एथेनॉल को क्या होगा? क्योंकि राइट पे जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी. रीजन क्या है? As the forward reaction is exothermic, so to compensate
the effect of low temperature, forward reaction is favored. समझ आ गई सबको बात मेरी? यस yes. एक प्रेशर का कोई देख लेते हैं. यहां पे वो कह रहा है प्रेशर इज डिक्रीज. whenever pressure is decreased ना, तो it favors the side with more moles of gas. सिर्फ more moles नहीं लिखना, more moles लिखोगे तो बड़ा सारा क्रॉस मिलेगा. more moles of gas लिखना है. अब इसको देख रहे हैं सब लोग, और से देख रहे हैं. अब यहाँ पे ये गैस, दोनों गैस, ये भी सब कुछ गैस है. 1 मोल इसका 1, तो टोटल 2 मोल्स हैं, टोटल इसका 1 मोल है. तो मोर मोल्स किस साइड पे? डिक्रीज करोगे तो मोर मोल्स वाली साइड पे जाएगा, इंक्रीज करोगे तो लेस. रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव मोर मोल्स, ऑन दिस साइड वी हैव लेसर मोल्स. टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हो, लो प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे हो, इट फेवर्स द साइड जिस साइड पे भी जा रहा है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन. समझ आ गई सबको? सो ये फिर से आपको मिलेगा यहाँ पे एनोड कैथोड बहुत सारा. एंड I hope you get something from this lesson. I wish everyone best of luck. Please इस पे काम करें, review all these chapters.